हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लोरी टू ऑल ऑफ यू। तो अभी इसमें एक लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है ऑली बोर्ड पे, तो उसको सॉल्व करते हैं। बाकी देखते हैं कैसा लेवल आया हुआ है। एंड आप में से जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया है वो अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मॉक। पार्कर एंड हिज फ्रेंड लेटर टुडे गोइंग टू अ स्काउट कैंप। ये सारे क्वेश्चंस मैं बाद में करूँगी। पैराजम्बल है, ये भी बाद में करना है। 10th से स्टार्ट है ना? हाँ। If you have a software company, you might dash a programmer in India. With so intellectual a guest, and she considered Prince Andrew to be, she felt that she had to dash her diplomatic tact. She had to utilize her diplomatic tact. Diplomatic tact. You might utilize programmers in India. ऊपर के हिसाब से देखा जाए तो you might enroll a programmer in India. You might recruit a programmer in India. Recruit नहीं, utilize हो सकता है, देखते हैं. He spotted Katie and Bill on the second scene. हो सकता है यहाँ पे. They had a dash and she stormed out of the house. They had a fight. They had a scene तो होगा नहीं. They had a scene तो होगा नहीं. They had a fight हो सकता है. The air smelled like a combination of diesel and petrol fumes. Prisoners' lack of a contact with the outside world and a continuous pressure of the jail authorities dash their problem. Jail authorities intensify their problems ना. यहाँ पे तो intensify आ सकता है. Compound their problem, mix their problems में हुआ वो intensify होता है. ज़्यादा कर देना किसी चीज़ को. Intensify their problem. The air smelled like a intensify of diesel and petrol fumes. Compound of a diesel, mix of diesel and petrol fume का compound of diesel. Compound their problems. I think यहाँ पे intensify या compound हो सकता है. To organize any event, it is important that host coordinates with all the planner. Missile was target in the military troops and provide the exact coordinates. ये correct है. Just give me 2 minutes to intake this piece of charcoal. Digest तो नहीं होगा. On one shelf was laying two in a bulky comprehend of the revenue laws. Intake. Light. The package was light and easy to carry. He used a match to light the candle. The room was filled with the warm and soft light. 1 and 3rd. Match. The saucer match ended the thrilling draw. He struck a matching to the light. The furniture perfectly matches. Spell. The child quickly learned how to spell his name. The pen and the word is a spell. The same backward in the. Then the book of the powerful spells. Which of the following the similar meaning of the word resilient? Resilient का similar पूछा ना, flexible होता है. Which of the following word is opposite to the meaning of word conventional? Conventional मतलब एक तरीके से usual type होता है ना. Ordinary, traditional, standard, radical हो सकता है opposite. What do you understand by the metabolite? यहाँ पे metabolite के बारे में दे रखा होगा. Metabolite physical matter, a set of things next to each other and set or what according to matter. A substance formed by a chemical bonding of two or more elements. Any substance produce a metabolic reaction. या फिर ये इन दोनों में से कुछ लग रहा है. ये तो बाद में पढ़ के ही समझ आएंगे. As she walked through the dense forest, she couldn't help but feel a sense of awe and the यानी कि CBA. The old abandoned mansion stood tall and the imposing its crumbling यानी कि BAC. With each passing movement, she could feel her heart pounding harder and harder as the intensity of situation grew. यानी कि CAB. As he gazed out the
the vast field of singing, and he could not help but feel a sense spence यानी कि CAB पहले इसको कर लेते हैं. What do you understand by the metabolite? बाद में करते हैं इसको. Which of the following statement regarding the organic agriculture is not believed by the scientists as per the passage? Many people, for the consumers and the farmers of scientists and international organization believe that the organic agriculture can produce enough nutritious food to feed in the world without destroying the environment while being more resilient to climate change and improving the livelihood of the farmer. So the following statement regarding organic agriculture is not believed by the scientists. It can produce nutritious food. It could not destroy the environment. It will be more resilient to the climate change, and it will be cause soil erosion. It will be improve the livelihood of the farmer. According to passage, compared to the conventional farm, what does an organic farm appear to be? But as with many important issues of our times, there are the more passionate opinion about the organic agriculture than there is scientific evidence to support them. And there's nothing lack of white about organic agriculture. Black or white, or compared to the neighboring one, conventional farm. Okay, conventional farm. An organic farm at first appear to be better for the environment, but that's not the whole story. With the following compared to the conventional farm, does an organic farm appear to be equally damaging, capable of producing more output, capable of producing less nutrition food, better for the environment, appear to be a better for the environment. Which of the following things is provided by the organic farm as per passage? High biodiversity, poor soil quality. Organic farm provide a higher biodiversity, hosting more bees, more greenhouse gases, bird and butterflies. They also have a higher soil and water qualities, poor soil qualities, higher. The thing provided by the poor water quality. ठीक है. In India, organic food is preferred for reducing pesticides exposure because of which of the following issues? Okay. For consumers in countries with weak pesticides regulation, like India, organic food reduces pesticides exposure. For consumers in the countries with weak pesticides. In India, organic food is preferred for reducing pesticides because of which of the following issues? Weak pesticides regulation. Which of the following is a disadvantage of organic farming? Also, most likely have a slightly higher level of some vitamin and a secondary metabolites पूछा था ना. Scientists can't confirm whether these minor micronutrient different actually matter the our health because of these differences. Disadvantages of organic farming. Difference in the nutrition value of the organic and conventional food is so small. You had to do better just eat an extra apple every day, whether it's organic or not. Organic food is also more expensive than conventional food at present and therefore inaccessible to poor consumers. Okay. Organic farming require more water. Organic agriculture typically more profitable, up to 35% more, according to the North America, Europe, and India than conventional farming. Organic also provide a more rural employment opportunity. Conventional practices for workers through the biggest advantages. Organic farming excesses decreases their exposure to the toxic. We still don't have whether the organic farm pay a higher wages or over the better working condition. The conventional farm, organic farm workers are most likely to. Mhm. According to the given passage, what is the biggest advantage of organic farming? The workers.
It provides more wages. It work needs more and lesser hours. It demands a fewer money. It decreases their exposure to toxic. Workers के लिए ना farming for workers, we still don't know whether organic farms pay higher wages or offer a better working condition than a conventional farm. Organic farm workers are most likely exploited in similar way as those in a field conventional, okay, but toxic, okay. For workers, though, the biggest advantage is that organic farming decreases their, ठीक है, यही है, पैराग्राफ तो हो गया, एक मिनट, package when I'm running out, is better if we split cleaning, peeling, and 6 सेंटेंस, 1 2 4 5 6. Money multiple through compound interest, they seem to make little difference on any given day. Habits are the compound interest of self-improvement. In the same way, the effect of your habits multiply as you repeat them. It is only when looking back 2 or 5 times. Below is a given of a set 6 set statement with the probability sequence. Okay. It is only when you're looking back 2, 5, or perhaps 10 years later, then the value of a good habit and the cost of a bad one become extremely apparent. Get the impact they deliver over the month and the year can be enormous. Okay. सो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको? या तो ये ऐसे हो सकता है, मनी मल्टीप्लाइज थ्रू द कंपाउंड इंटरेस्ट. In the same way, the effect of your habits multiply as you repeat them. Money multiply through the compound interest. Habits are the compound interest of the self-improvement. Habit are the compound interest of self-improvement. या तो A से start हो सकता है या C से start हो सकता है. There is a two possibilities. उसके बाद देखते हैं habits are the compound interest of self-improvement. They seems to make a little difference on any given day, yet the impact they deliver over the month and a year can be enormous. यानी B और F इसमें pair है. It is the only when looking back. In the same way, the effect of your habit multiply as you repeat them. In the same way, the effect of your habit multiply as you repeat them. They seems to make a little difference on any given day. नहीं, it is only when looking back to the, या तो ई एंड में हो सकता है, ई भी एंड में हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है. मनी मल्टीप्लाई थ्रू द कंपाउंड इंटरेस्ट. Habit are the compound interest of self-improvements. Money multiply through compound interest. A और D का है पेयर. Money multiply through the compound interest. In the same way, the effect of your habit multiply as you repeat them. Okay. Habits are the compound interest of self-improvement. That the value of a good habits and the cost of a bad ones become extremely apparent. C और E पेयर हो सकते हैं. There is a choice. ठीक है. Money multiply through the compound interest. In the same way, the effect of your habits multiply as you repeat them. They seem to make a little difference on any given day, yet the impact they deliver over the month and the year can be enormous. Habits are the compound interest of self-improvement. It is only when looking back 2 or 5 or perhaps 10 years later that the value of a good habits and the cost of a bad ones become strangely apparent.
The effect of your habit as you repeat them is only when you're looking back to over 5 or 10 years later that the value of a good habits in the यानी ई हो सकता है एंड में, ई एंड में है, ई से पहले डी है और डी के साथ ए आएगा, ए डी ई हो गया. Habits are compound interest of self-improvement. They seem to make a little difference on any given day, yet the impact they deliver over a month and a year can be enormous. कुछ कुछ समझ में आया है मुझे. अब money multiplied through the compound interest, yet the impact that in the same way the effect of your habits multiply as you repeat them. Habit are the compound interest of a self-improvement. Habit are the compound interest of the self-improvement. This seems to it is only when you're looking back. It is only when looking back 2 or 5 years later the good habit in the course apparent. The habit multiply as you repeat them. It is only when you're looking. Habit are the component of a self-improvement. They seem to make a little difference on any given day, yet the impact. CBF. ये नहीं CBFADE. लग तो कुछ ऐसा ही रहा है. पढ़ के देखते हो. Habits are the compound interest of self-improvement. Habits are the compound interest of self-improvement. They seems to make a little difference on any given day. Any given day, yet the impact they deliver over a month and a year can be enormous. Money multiplied through compound interest. In the same way, the effect of your habit multiply as you repeat them. It is only when looking back 2 or 5 or perhaps 10 years later that the value of our good habits and the cost of our bad ones become strongly apparent. अगर ये ठीक है तो कर देते हैं, देखते हैं. 3 4 ए तो है ही नहीं, मतलब मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ. समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे बनेगा ना. तो मैं फिर सी को पहले नहीं तो ए को मनी मल्टीप्लाई थ्रू द कंपाउंड इंटरेस्ट. इन द सेम वे द इफेक्ट ऑफ योर हैबिट मल्टीप्लाई एज यू रिपीट देम. तो ए और डी एंड में आएगा क्या? In the same way, the effect of your habit multiply as you repeat them. It is only when you're looking back, repeat them. This seems to make a little difference on any given day. Yet the impact they deliver over the month and the year can be enormous. यानी कि ADBF मतलब in the same way the effect of your habits are the compound interest of a self improvement. छोड़ो, मेरे को करना ही नहीं अभी, ये दिमाग खराब हो गया मेरा. Parker and his friends later today going to a scout. Going for a scout camp. मुझे गलती नहीं करनी. He spotted Katie and Billy on the second fight. They had a scene. They had scenes. They had a part. They had a fight. And she stormed out of the house. Fight and waited for the Katie's attention. In second row. They had a row and she, I don't know, fight is something which होना चाहिए. The air smelled like an intensified of diesel, compound of diesel. Pressure vigilatory compound their problem. इसको मैंने बहुत किया पर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा. एंड में या तो लास्ट में ई हो सकता है
ही कर देती हूँ एंड में। और फर्स्ट, मनी मल्टीप्लाई थ्रू द कंपाउंड इंटरेस्ट, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सैलरी। ठीक है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इंक्रीमेंट 20%, प्लस प्लस माइनस 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 11 क्या रहता है 33, 13 और 11 और 26 26 28 5 35 और 7 21 नहीं 1900 3 3 3 9 1909 5 15 1915 34 होता है। यहाँ पे नीचे वाले बड़े हैं तो वाई ग्रेटर माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा 3 सकते 20 21 20 21 22 दो कम 2 चौक 8 2 15 2 2 4 13 चौको 52 होता है। 4 3 8 16 16 और 13 ठीक है 221 है, यानी कि 19 27 1931 217 7 21 3 एकम 3 4 5 7 एकम 7 एकम 1 7 12 17 और 13 17 और 13 यानी कि ये इस तरीके से होगा। उसके बाद है माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 24 और फिर से 17 और 13, पर ये वाले नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे द टोटल बुक्स इन 3200 हिस्ट्री, इसमें बुक है हमारी हिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। उसके बाद 28% और 32 और 28 8 दूनी 16 2 4 1 5 8 3 24 3 दूनी 6 7 8 6 5 4 9 8 96 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 26 और 32 आ जाएगा, जो हमारा होता है 832 समथिंग, 12 दूनी 24 12 36 37 38। उसके बाद आएगा 1/4 4 8 32 800। उसके बाद आएगा 9 दूनी 18 9 3 27 1 28। अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 16 24 16 24 अगर मैं यहाँ पे 892 प्लस में 832 प्लस में 384 800 और 288 नहीं, कहीं गड़बड़ कर दी है मैंने, रुक 28 और 32 ठीक है, 26 और 32 भी ठीक है, 9 280 तो आएगा 9 से भी 1/4 800 आएगा और 12 32 हो सकता है, बट 384 ही तो है। कहाँ गड़बड़ कर दी फिर, 900 25 और 32 और 25 800 ही तो है, मतलब कहीं तो गड़बड़ हुई है, थोड़ी बहुत ही हुई है पर हुई है। 384 12 और 32 इसमें 800 अरे सही तो है, मैं बेफालतू में सोच रही ज़्यादा। Find the number of economic book available in library. Find the number of economic book. Eco tiny library which is 2 times of the sum of the number of physics and bio. Physics and bio. 8 4 12 8 16 17 1 3 5 1 6 3 4 7 9 14 6 12 1 13 13 44. What is the average number of a book maths, physics and history? Maths, physics, history. 6 4 10 2 12 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19 16 17 18 19 20 21 3 चौक 12 7 4। What is the difference between the number of a physics and history book? What is the difference between number of a physics and history book? 6 4 10 9 8 17 9 8 17 1 18 का 1 8 9 10 11 1 12। So 80 number of physics and history book together to the total number of a chemistry and bio 8 9 10
10,800। 2 7 8 9, ठीक है, 192। With the ratio of the number of a book in physics with respect to the number of a book with physics with respect to the psychological book available in the library, number of a psychology book available in the library, 40% the number of a chemistry book available. Chemistry का चुक 320, 2 एकम 2 निम्न 18 4, 2 एकम 2 6 12 0, 2 निम्न 18 2 6 12 2 8 16, 8 निम्न 16 10 2 15 6 12 6:5. With the sum of the number of a book in physics chemistry 4 8 8 9 10 11 का है, chemistry and maths 832 available, 4 5 6 8 9 10 11 8 9 10 का 1 2 2016. With the percentage of number of a book of bio with the respect to number of a book with bio with respect to book in chemistry available, chemistry at 8 24 25 26 27 28 24 39 48 36%. ओके, यहाँ पे x% माइनस 73% जाती है, 12 7 21 7 चौक 28 29 प्लस 60 2 6 15 352 प्लस में 80 2 8 5 13 432 डिवाइड बाई 2 2 4 2 6 12। यहाँ पे आएगा 5 325 4 पंजे 6 पंजे 30 यानी 55 बाई 5 11 33 माइनस 2 और 1। 144 माइनस में 25, यहाँ पे आएगा 5 4 9 और 3 और 1 119 डिवाइड बाई 98 9 में 81 9 और 8 9 8 17 9 7 49 7 होता है। और उसके बाद 141 441 माइनस में 44 यानी 11 6 1 7 और 3 यानी 39 डिवाइड बाई 55 5 6 5 11 11 33 और 11 7 37। कहीं गड़बड़ करी है क्या? 1 मिनट 44 और 1 मिनट 11 चौक 44 होता है 4, यहाँ पे सिर्फ 4 माइनस करना है। 337 441 में से सिर्फ 4 माइनस करना है। 4 140 440 और 437 45% ऑफ 20 45% ऑफ 25 5 में 45 9 प्लस में 68 और 9 8 9 7 77। उसके बाद 347 माइनस में 6 347 और 564 जिसको डिवाइड करना है हमें 141 से। कम 4 चौको 16 4 1 4 माइनस करना है यहाँ से तो 3 343 तो 7 का होता है। 25% 4 ऑफ 4 दूनी 8 4 7 28 माइनस 48% ऑफ 25 पंजे 25 चौको 100 4 1 4 दूनी 8 12 पंजे 60, यहाँ पे आएगा 3 और 5 और 3 माइनस का 33 और प्लस का 10 या माइनस का 23। उसके बाद 11 से 3 और 4 में से 1 गया, ठीक है, 13 में से 5 3 8 गया और 0 10 में से 3 गया 7 और प्लस में 497 7 8 9 8 17 4 3 7 1 8 और यहाँ पे डिवाइड 2 चौका 6 2 18 439 5 6 4 10 और 8 9 8 17 1 18 का 1 5 3 8 1 9 980 डिवाइड बाई 28 2 चौका 2 2 चौका 18 0 14 2 7 7 2 14 7 49 35 माइनस में 31 4। उसके बाद आएगा 784 यानी कि 68 होता है माइनस में 52% ऑफ 0 13 दूनी 26 13 पंजे 65 66 67 68 86 किसका हो सकता है? 676 तो होता है हमारा 26 का, 26 माइनस 2। उसके बाद है 22 यानी 23 x इंटू में 23 माइनस में 846 और यहाँ पे आएगा 576 प्लस में 694 यानी 6 4 10 नॉट 16 1 17 का 6 5 11 1270 प्लस में 846 यानी 6 7 6 11 8 9 10 11 का 1 2 और यहाँ पे हमारा 23 से डिवाइड करेंगे इसको 23 230 होता है यानी कि 9 3 27 9 2 18 19 20 9 10 11 3 1 4 और 2 92।
उसके बाद है 5 9 29 29 इंटू में 16 19 और 16 9 जून 6 12 13 14 15 16 17 9 एकम 9 2 एकम 2 4 9 7 16 1 2 3 1 4 464 और यहाँ पे आएगा x इंटू में 2 माइनस में 82 83 ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू में 5 यानी 2x है 2x माइनस में 5x 464 464 1 में 16 381 और 3x 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 327 अरे होना तो कुछ ऐसे ही चाहिए था। यहाँ पे 2x माइनस एक्स हो गया ना और 29 इंटू में 16 हमारा 464 होता है माइनस में करेंगे इसमें से 83 जाएगा 381 आ गया डिवाइड करेंगे 3 से हाँ 127 है यहाँ कुछ नहीं हो सकता मेरा। x डिवाइड बाई 11 प्लस में 6 46 इज इक्वल टू 432 प्लस में 13 और 17 12 का 1 और 221 है ना 221 और 3 और 3 और 5 4 5 6 53 645 5 3 8 आया 1188 88 कहीं तो गड़बड़ है नहीं तो 88 आ रहा है रुक तो 13 और 17 और 13 तो होता है 221 653 और 456 6 लूँ तो 4 3 7 77 x इंटू में 9 प्लस में 236 और 16 32 16 कम 16 7 18 19 192 प्लस में 1987 7 8 9 9 8 17 9 10 11 का 1 2 ठीक है। फिर यहाँ पे 236 आ जाएगा माइनस होके 3 4 19 डिवाइड में 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 एक 9 9 दूनी 18 29 216 यहाँ पे आएगा x इंटू में 30 19 इंटू में 21 9 एकम 9 1 एकम 9 दूनी 18 2 एकम 2 1 3 9 8 9 349 और यहाँ पे आएगा 815 और 399 यहाँ पे 5 सीधा 400 करेंगे 414 आ जाएगा ठीक है 414 और ये नहीं 415 नहीं और 416 आएगा ठीक है 416 और माइनस में फिर 19 आएगा यहाँ नहीं 19 तो हो गया डिवाइड बाई 13 416 डिवाइड बाई 13 समथिंग 416 3 और 2 32 तो 32 का तो 1024 आता है। कमला विमलन 21,600 और 50400 ठीक है रिस्पेक्टिवली इन द बिजनेस 00 से 00 गया। If Kamal invested for her 8 months, then what is the share of the Vimal? 8 in 12 4 दूनी 8 4 3 12 ठीक है। अब देखते हैं 2 एकम 2 16 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10 2 दूनी 4 2 5 2 चौक 8 2 एकम 2 दूनी 4 2 6 12 2 दूनी 4 2 7 14 2 6 12 2 3 6 और 3 और 2 3 एकम 3 में 27 3 3 9 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 एकम 3 3 7 21 2:7 आ गया 30,600 एनुअल प्रॉफिट 7 8 9 एकम 9 29 27 9 36 0 यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ विमल 7 7 चौक 28 7 21 बाई 23 फिर 23,800 उसके बाद स्टोर मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 150% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड आफ्टर अलाउइंग टू सब्सिडी डिस्काउंट ऑफ 10% 150 पे एक बार 90% और एक बार 80% ठीक है। ही सेल द आर्टिकल एट 860 0 0 0 0 डबल 0 1 0 से 1 0 के 5 15 5 दूनी 10 2 चौक 8 9 चौक 36 और 3 36 18 3 3 9 10 1080 यहाँ पे है 8640 यानी कि 9 एकम 9 दूनी 18 9 एकम
9 81 अनुचिक 54 0 12 7 12 96 एक्स की वैल्यू 8000 आइकोस प्राइस. A boat have traveled in the 30 hours and traveled in Armstrong from point A to B and come back to similar point of A in the distance of travel. In the school of 564 books distributed among 50 students in such a way that each boy get a n book and each girl get a n minus 2 book. मतलब ये अगर 3 बुक ले रहे हैं तो ये एक ही बुक लेंगे. If the number of a girl is 18, 50 student है, number of a girl is 18, तो 50 में से 18 to 432 बॉयज़ हुए. 32n प्लस में 18n माइनस 36 इज इक्वल टू में 564 बुक्स है. 36 6 4 10 6 3 9 1 10 का 1 600 18 8 9 10 3 4 1 5 50 0 0 5 1 10 12 n की वैल्यू है 12 तो n माइनस 12 n माइनस 10. ठीक है, बॉयज़ को इतनी और गर्ल्स को इतनी. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ बुक गोटन बाय 4 बॉयज़ 5 36 12 और 3 गर्ल्स 48 और 30 18. The average number of 47 distinct number is 50. 7 पंजे 35 5 चौक 20 और 3 23. So if the average of first 23 number is 45, 5 3 15 4 3 12 1 13 5 2 10 4 2 8 1 9 5 3 9 10 and the last 23 52 3 9 6 2 9 4 5 3 15 कहीं 5 9 10 11 6 5 9 1035 6 5 11 9 10 3 13 2 और 2 10 2 2 3 1 यानी कि 9 और 4 और 1 1 1 1 9. A pipe A can fill the tank in 8 hours and pipe B and C can fill the tank in 18 and 24 hours. And while pipe B and C can empty, pipe A fill the tank in 8 hours while pipe B and C can empty the tank in 18 and 24 hours. Okay, 18 दूनी 36 12 13 2 4 2 18 2 1 2 4 6 12 और 9 2 1 2 3 3 और 3 दूनी 6 फिर से 2 आएगा फिर से 3 आएगा 3 3 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 और 4 6 24 4 12 13 14 144 144 डिवाइड बाय 24. ये 6 पे आएगा और ये हमारा जो 18 है ये समथिंग 8 और ये 18. ठीक है, 2 18 2 4 2 6 2 2 14 2 4 72 भी हो सकता है. ठीक है, 72 भी है. अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय टू बोट. Find the time taken by to fill the tank completely in all the 5 open. Okay, 9 4 3 7 2 2 3 6 2 2 6 12 36 hours. m square plus minus 2 6 12 2 16 2 3 2 4 8 17 2 34 2 2 4 2 8 17 और 8. यहाँ पे है 3 कम 3 2 6 0 12 और 10 और 3 30 और 12 5 2 10 और 3 5 2 10 और 3 5 3 15 4 3 12 5 2 24. नहीं, ये भी नहीं होगा. 20 3 3 9 2 18 20 और 18 हो सकता है. 20 और 18 है, ये दोनों ही ऊपर वाले बड़े हैं इससे, m बड़ा है. Anuj age is 5 years less than the double of the Pritam age. Okay, 5 years less than the double of the Pritam and Anuj. Anuj is 10 years more than the triple of the age of Pritam. Anuj age is 10 years more than the triple of the. If Anuj age is half of the, क्या है? Anju. If Anju age is half of the Anuj is 5 years ago. क्या दे रखा है टिपिकल सी चीज़.
The investment of 8,000 20% rate of interest compound annually for 3 years यानी 8 दूनी 16 यानी 9600 पे फिर लगेगा हमारा 9600 पे फिर 20 अगर डिवाइड बाय 5 कर दो सीधा तो हमारा 90 और प्लस में 9600 और फिर से इस पे अगर मैं क्या कहते हैं डिवाइड कर दो 5 तो डिवाइड 5 2304 अरे ख़त्म हो गया यार कहाँ है यार 10 people live on 10 different floors 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है 4 people live between T and X 2 people live between T and P where P live of T 2 people live between P and T 2 people live between T P and T P above है 4 or 5 people live between X and R live above T 5 2 people live between P and T oh wait 4 people live between T R live above T और 2 people नहीं ऐसे नहीं होगा X 3 4 T यहाँ पे आ गया 5 यहाँ पे 5 लोग हैं ना 5 people live between R यहाँ आ गया 2 है तो P यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ऐसे हो सकता है 2 people live between W and U where W live adjacent to T 2 people W and U हो गया S live immediately above B Y lived above P assume there is no floor more floor in that apartment and only one staying in each floor okay P Q R S T how many people live between Y and W Y and W 1 2 3 4 वो live immediately above R immediately above R कुछ तो हो गया नहीं क्यों हो गया how many people live above S live above S 2 2 4 2 6 है ही नहीं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 6 है none of these which of the following is an odd from the rest WV YQ PR ST UX okay in the word alphabetical order from left to right and the second letter of the fourth word यानी कि E D T X X का I होगा in the meaning ascend सिंपल सा सेंड बन रहा है इसमें we choose only one एक ही वर्ड बनेगा 6 बॉक्सेस 6 5 4 3 2 1 यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कैप्टन जिंटू ठीक है B1 is immediately above below B6 B1 immediately below B6 दे रखा है which is not kept B1 2 boxes below between B2 and B5 B5 which is kept on the odd number position या तो B5 यहाँ होगा 2 यहाँ पे होगा फिर 2 यहाँ पे होगा तो 5 यहाँ होगा और यहाँ लिखा हुआ है neither B6 nor B3 is kept on the topmost floor और एक जो था 6 ऊपर था 1 के 6 5 के साथ नहीं आएगा 6 ऊपर था 1 के ठीक है B3 टॉप पे जाएगा नहीं B3 नीचे आएगा और 1 मिनट कहीं उल्टा कर दिया मैंने इसको B5 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 1 यहाँ B3 ऊपर है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है ओके B3 is immediately above B4 ठीक है करेक्ट है यहाँ पे और हाउ मेनी बॉक्स आर कैप बिटवीन B4 एंड B5 B6 1 2 3 3 हो गया ABCD are 7% of their meeting in the different days of a week namely starting from Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday कितने लोग हैं 7 1 2 3 4 5 6 2 4 2 6 7 person they like a different color person color
हो गया. Each of them like a different colors. B like orange color and has a meeting on Monday. F like brown color. One who's F like brown. One who has meeting on Wednesday. Like blue. Like blue. Okay. D like a pink color and doesn't have a meeting on a Friday. D doesn't have a meeting on Friday and D like a pink color. और उसके बाद है E has a meeting on Thursday. E has a meeting on Thursday and G has a meeting on the Saturday. D यहाँ पे था नहीं. D यहाँ पे हो सकता है पिंक या फिर एक बार D यहाँ पे हो सकता है पिंक. दो पॉसिबिलिटीज है D की. C doesn't like a yellow color and has a meeting on a Sunday. C ऊपर है और ये गलत है फिर. C doesn't like a yellow color. येलो नहीं आएगा यहाँ पे. The one who like a white color doesn't have a meeting on a Saturday and a Sunday. White भी यहाँ पे नहीं आएगा. White यहाँ नहीं आएगा. White यहाँ नहीं आएगा. White इन दोनों में से एक जगह पे आ सकता है. The one who have a white color doesn't have a meeting on a Saturday and a Sunday. Okay. F brown है. F brown, white, yellow और बचा हुआ कलर ऊपर आ गया. Which is the meeting on Tuesday? Pink. D. Which color in D? G like. G like yellow. A has meeting on which day? A has a meeting on Wednesday. O like a black color. C like a black color. O like in a certain A Wednesday. D Sunday. F Tuesday. B Thursday. C Friday. A ये Wednesday, ये correct Wednesday है. एक मिनट. How many such pairs of letters of the similar? Similar. Which are the many letters between them? Okay, 19, I9, 13, 9, 3, 1 and 18. गलत ऑप्शन नहीं है. सिमिलर 12 L12 भी तो था 9 के बाद. M13 9 12 13 14 15 16 10 11 12 10 11 12. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा. नहीं वन. A certain number of people have there and seated in a linear or facing to the north. Okay. Information about the only some of them are known. 6 persons seated between S and R. 5 6 S and R. 3 4 5 6 S and R. S was seated to the left of R. Correct. 4 persons seated between R and P. 1 2 3 4 3 4 R and P. 4 people seated between P and T, where T is seated one of the end. 2 3 4 1 2 3 4 P and T ऐसे हो सकता है. Only one person seated between V and T. V and T. Number of people seated between U and Q or same as number of people seated between R and V. 1 2 3 4 5 6 7. Q was seated to the right of S, but not written to P. Number of people seated between V and P was same number of people seated between Q and S. Q seated to the right of S. 3 4 5 6 7 U. 1 2 3 4 5 6 7 है ना. और V and T P and V 1 2 1 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 U. Was the same number. Okay, U was not adjacent to P. U was not seated adjacent to P. तो है ही नहीं adjacent to P. Only one person seated between V and T. Number of people seated between U and Q is same as number of people seated between R and V. U and Q. R and V. Q is seated to the right of S, but not adjacent to P. अच्छा.
ये वाला करेक्ट है फिर। हाउ मेनी पीपल वर सिटेड टू द राइट ऑफ आर? दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 10। हाउ मेनी पीपल वर सिटेड बिटवीन बी एंड क्यू? बी एंड क्यू, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11। हाउ मेनी पीपल वर सिटेड बिटवीन यू एंड एस? दो, दो चार। Whom the following were seated to the right of you? All of them. How many people were seated to the right of you in the row? 10, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, only a few P's and B's. Foreigners are P's. So, Canadians, P's and B's. Only a few shirt, pink. Some music is pink. At least some shirt is music. Or music. No music is shirt. Either. Only a few whisper is screams. All whisper is silent. Some scream are definitely not silent. All silent can never be scream. All silent can never be scream. How can we silent? All whisper are silent. Wait. Only a few whisper is a scream. All whisper are silent. Silent, ठीक है. Some scream are definitely not silent. All silent can never be scream. Second ठीक है. Second. यहाँ पे how many symbol are there which is immediately preceded by the letter और symbol के पीछे letter. एक है, दो, तीन ही है. उसके बाद if all the number are dropped from the string number then which element will be fourth from the right and after the rearrangement? नंबर ड्रॉप करने पे फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड. 2, 3, 4. Okay. How many such symbol are there which are immediately preceded by symbol which are the immediately preceded by the number? How many such symbol are there which is immediately preceded by the preceded and immediately followed by the number? दोनों साइड. Symbol then number. Symbol then number. By and immediately followed by a number. Symbol number. Symbol के आगे पीछे number तो है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है, none है, ऐसा कहीं नहीं है. Which of the following element is fifth to the right of the element which is eighth from the right hand? 8, 5, 8 minus 5 आया 3, 3 I आया. How many number are in between W and U? Number W और U के बीच में number 1, 2, 3. उसके बाद है 8 balls are different radius which is different natural number. Ball G has a third highest radius. G has a third highest radius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third highest radius. The ball with the lowest radius has a radius is 17. 4 ball are the lesser radius than the ball S, but more than ball T. 1, 2, 3, 4, 3 ऐसा है. The radius of a ball L is immediately higher than the radius of ball T. The radius of ball is immediately higher to the radius of ball P. The radius of a ball Q immediately more than the ball with the radius of 55, which is neither a ball L nor ball G. Okay. 2 ball are radius between W and the ball with the radius of 40. 1, 2, 3, 4. S 4 T L. E is immediately above P. Q is greater than this. Q is greater than 55. 2 ball are between the ball of W and the ball with the radius of 40. यहाँ पे है
Q is immediately more than the ball with a radius of 55. How many ball have a radius higher radius than ball W? दो दो चार दो छः एक साथ. P plus G is 91 यानी 51 G. Then an L plus W is 17. 50 minus 3 और 4 और 3 33. Then what is the value of 33? 3 4 5 3 8 84. What could be the possible radius of ball E? Possible radius 40 से ज़्यादा 55 से कम 47 हो सकता है. तो ये बच्चे तो फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू. P से R नहीं होगा, Q से T भी नहीं होगा, R से T, P से S हो जाएगा. Okay, 6 people have born in a different, okay, 2 different months of January of 9, जनवरी के 9, 12, 29. उसके बाद मार्च का है 9, 12 and 29. ठीक है, 6 people है ना. 1 2 3 4 5 है, यहाँ तक ही है सिर्फ. C was born in 29th of a month. C was 29th in the month. 2 people were born between C and D. B was born immediately before D. A is born immediately before F. A is born immediately before F. E was born before A but not immediately. B is born immediately before D. ठीक है, A is born immediately before F. E is born before A but not immediately. तो वैसे भी नहीं आ रहा, before है तो ये वाला ठीक होगा. Whom the following is born on 12th of January. 12th of January, B. How many people are born between E and C? E and C 1 2 3 4. Whom the following was born immediately before A and D. On which of the following date in the month F was born? F was born on the 12th of March. Find the odd one out. Odd one out यानी E January 12, F March 29, D March 9, B January 12, A March 12, A March 12. यार मुझे इसमें यही नहीं समझ में आता कि सारे पैटर्न एक जगह से हैं और फिर जो सबसे अलग है B January 12. ठीक है, पहले ऊपर भी ऐसे पैटर्न है तो हो गया. सबमिट. तो ये रहे मेरे स्कोर, मैं दिखा देती हूँ ठीक से. हाँ, तो इंग्लिश में मेरे 3 रॉन्ग हुए हैं, 19 स्कोर आए हैं. मतलब मैं लिटरली बताऊँ तो वो जो पैराजिम्बल था ना वो समझ ही नहीं आया. मतलब वो बार बार लग रहा था कि बन जाएगा बट फिर उसमें से दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने वो नहीं बनाया. अगर आप में से किसी ने बनाया तो उसका सीक्वेंस मुझे ज़रूर बताना, मैं भी चेक करूँगी कि क्या सीक्वेंस बन रहा था. बाकी सिर्फ इंग्लिश में ही करेक्ट है, वो इंग्लिश में ही गलत गए हैं, बाकी सब में एक्यूरेसी सही आई है आज. मतलब आज ना मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मतलब फाइनली रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 35 हुए हैं बड़े दिनों बाद. तो मतलब रीजनिंग इस बार इजी आई थी, मतलब नॉर्मली इतनी इजी नहीं आती है. इस बार इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा था इसके अंदर. तो ये रहा मेरा स्कोर टोटल. आपका क्या स्कोर है वो ज़रूर बताना. बाकी तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.